Okay. Have you seen the video that I have shared you about statement of Yes, sir. purpose? So I'll be checking those three criterias, है ना? हाँ sir. Uh, so neither the life of an individual or nor the history of a society can be understood without understanding both. She writes, the quote encouraged me to explore subject fields beyond psychology, but the individual and the individual. My experiences as a student editor of college newsletter provided me with ample opportunity to explore and write about variety of topics across mental health and society. So, Vardhan, how do you think that the other person who is reading knows you well? Sir, they don't know me at all. So they don't know me at all. So they don't know you at all. Reading this, if I'm knowing you, it's still okay. है ना? हाँ. Reading this, if I'm not knowing you, and you started with this that you want to explore psychology and beyond psychology and individuals, okay, Okay. and all of a sudden you wrote about your experience as a student editor, and this seems not this is not in sync. Okay. Okay, so I'll read again because मतलब ये इतना गलत है कि इस पे कमेंट करना सही नहीं है. ठीक है, तो मतलब इसको रिफ्रेज करना पड़ेगा. तो मैं रिफ्रेज नहीं बोलेंगे इसको, मतलब जो पूरे एसओपी की प्लानिंग है ना, हाँ. उसको रिप्लान करना पड़ेगा. बट स्टिल आई एम स्टडीइंग रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एसओपी. Participating in various international symposium on topic of health and culture entitled me to research on topics such as storytelling in various culture. I also explored the change and growth of cultures, which was fascinated to study, requiring multifaceted approach. Again, it's like it's changed a lot from the second paragraph, which I have made actually. So मैंने अलग से कर Hmm. दिया. Having researched on individual in the society as part of my dissertation and standalone project helped me to explore the role of social media in body esteem. ठीक है. Furthermore, this research added in broadening my perspective on the intricate relationship between saying hyper positive and feel good posts. Positive and feel good. Additional exploring social media and its domino effect in comparing ourselves to others. Sociology and cultural studies must have cross-dimensional intersection to bring impartial approach towards human society. The Masters in Society and Culture course would provide me with such insight in at a granular level. With IIT as the course provider, it further enhanced my interest as it will not only help me get a better perspective but also refine my thought process. नहीं नहीं, ये आईआईटी के साथ ये टैग करना जरूरी नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात. Okay. It's not about IIT which basically give you opportunity to refine your. हाँ. IIT gives you exposure to technology also. IIT will give you to intact or not intact, what I'm saying, interact with people of technological field. And since technology is very much part of our culture now, Anna, Hmm. uh, being at IIT will feed that gap of, from other institution where technology is not there, and we still study the same subject in very much non-technical aspects. Okay. So that's the advantage you can have. But the entire SOP is not in sync. Okay. You Sir, have can you to give me be. some suggestions for bringing it in sync? I've been getting. हाँ, मतलब I told you like in that same way, start with how this course basically suits you, है ना? Okay. With a little about your background, about your background, Okay. plus what do you what do you think for you future, इसको मेंशन करते हुए. सर फ्यूचर वाला पैराग्राफ थोड़ा नीचे है सर, आप नहीं स्क्रॉल वो करोगे फ्यूचर तो वाला ऊपर. पैराग्राफ ऑफ कोर्स नीचे होगा. इट्स सपोज वेरी मतलब वो लेवल पे, है ना, सिंगल लाइन, है ना. ओके. मतलब not, you don't have to explain the complete thing इधर, है ना. इसके साथ you need to ये match it with the course. ठीक है.
और उसके बाद फिर जो तुमने सारी चीजें लिखी है ना, दैट हाउ दिस पर्टिकुलर कोर्स, मतलब यू आर एलिजिबल और यू आर वेरी मच सूटेड टू स्टडी दिस कोर्स, ठीक है। तो ये जो पूरा है इसको थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू मतलब श्रिंक इट, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सर शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा एसओपी ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? कितने वर्ड का चाहिए? 350 वर्ड्स मैक्स है। हाँ तो नहीं भी करना, मतलब मुझे लगता है और भी चीजें लिखनी पड़ेगी अभी तुम्हें, तो इसलिए ओके। सॉर्ट करना, थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यू कैन राइट कि जब ये हो जाएगा तो यू कैन राइट कि व्हाट योर यू, मतलब हैव यू रिटन एनीवेयर दैट व्हाट इज योर एजेंडा फॉर नेक्स्ट 2 years? यस सर, आई हैव रिटन इट नीचे। कहाँ स्क्रॉल पे? कीजिए। उसको सेकंड पैराग्राफ में लिखो। ओके। आई इंटेंडेड ऑन यूजिंग these 2 years as a stepping stone pursuing my career, नहीं नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। मतलब try to write something which is in your, which you do want to do in college, like focusing more over this particular aspect of society, or researching on these things, ऐसा कुछ लिखो। सर उसका ज्यादा मेरे को लेकिन पता नहीं है सर, बिकॉज कोर्स ठीक है, में एक ऐसा कुछ जनरल दिया आइडिया नहीं तो है। होगा ना कि कौन सा फील्ड एक्सप्लोर करना चाहते हो तुम। हाँ सर, तो मैंने लिखा बस, हुआ है द मल्टी हाँ लिखिए। लास्ट लास्ट लाइन देख लीजिए। The multitude of subjects offered in this course are within my area of interest, with a special focus on perspective of history। तो हाँ, तो इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो वहां सॉर्ट कर रहे हो तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा, मतलब नॉट मच। और इसको इसको एंड कीप इट इन सेकंड पैराग्राफ, नॉट सेकंड पैराग्राफ पैराग्राफ, मतलब जो तीन चीजें हम बोलते हैं ना तुम्हें पिच करने के लिए, तो फर्स्ट तो ऊपर हो गया, ठीक है। हाँ एंड उसके बाद फिर थोड़ा फ्यूचर या एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, उस पे कि हाउ डू यू यूज द सब्जेक्ट, या हाउ विल यू अप्लाई द सब्जेक्ट इन रिसर्च और फर्दर कैरियर, इन फर्दर, ये इन योर कैरियर, उसके लिए तुम लिख सकते हो। सर, फर्दर रिसर्च और ये सब जो ये लोग आप सजेस्ट कर रहे हो सर, आई इसका एम नॉट लाइक। सेइंग कि फर्दर रिसर्च लिखने के लिए, सी माय पॉइंट इज यू हैव टू राइट 3 बेसिक पॉइंट्स इन योर एसओपी, हम्म। because as a professor I would, what I would like to know, see, but you have to check first thing कि whether you are eligible or not, ये पहली चीज मुझे पता करनी है, ठीक है कि नहीं? हम्म। मतलब तुम समझ रहे हो ना, आई डोंट नो यू ओके एंड या। आई विल हैव एसओपी एटलीस्ट इन, मतलब हंड्रेड्स इन नंबर, मतलब 100 200 कितने भी ज्यादा एसओपी हो सकते हैं। सो थ्रू दिस एसओपी आई हैव टू पिक दोज कैंडिडेट्स who are basically, matlab, as a professor what do I think, I have to live with you for the next 2 years, है ना? हम्म। And you as an alumni will be attached to the institution for the next 50 years, राइट। getting my point? तो पहले तो एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि what do you think that you will be doing here. So you don't have to write the syllabus or curriculum that they are offering, you'll be writing what extra that you will be doing, ठीक है। ओके सर, मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे पर्सपेक्टिव इन हिस्ट्री है, पॉलिटिकल थॉट है, उसके अराउंड कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट दिस कुड बी? नहीं, इस पे तुम्हें पहले खुद सोचना होगा, देन आई विल गिव यू ओके। द थर्ड पॉइंट कि हाउ डू मेक अस प्राउड, है ना? इसको इसको दूसरे स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस 2 years, विथ लर्निंग्स ऑफ दिस 2 years, है ना? हम्म। विथ लर्निंग्स या रिसर्च, और जो यहाँ पे थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है इसलिए मैंने रिसर्च लिख दिया, बट ठीक है, लर्निंग्स ठीक है। ये द फर्स्ट स्टेटमेंट आल्सो कवर्स कि एक्चुअली व्हाट विल यू ऑफर टू द क्लास, राइट।
And also uh, eligible offer to the class, and also of course you don't have to write it in separate terms, but the entire all these three questions will basically also match you with your future aspirations. सर ये एक डाउट है मेरे को, ये जो कोर्स में ये लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ाएंगे, तो उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी रहता है? हाँ, हो सकता है, and you can bring that you and your हाँ, future aspiration with the subject, with the course, and vice versa. ठीक है? ओके। ठीक है, so ओके this is what you have to do, है ना? तो इसको rewrite करो, ठीक है, with these question in your mind, so that after reading, when you can write anything, but the professor must get these three things from your recipe. ठीक है? ऑलराइट। There is no fixed formula, there is no fixed way to write it. It's your style, it's your SOP. You can write it in your own language, but me as a professor must get these three answer of these three questions from your recipe. Okay? Sir, when they ask ki what are you offering to the class, what can I, without, I haven't attended any lectures yet, so what? No, basically you are offering all these things to the class, no, which you have written. Okay, my Whatsoever you experience, have previous extra, experience. which other people don't have with their academics. Okay, So all these things you will be offering to the class, which you have written in all these research, and you have done the symposium. So learning that you have again all through these research or academic environment, you will be offering that to the class, which will not be offered by any other person of the class. okay, Okay? all right, sir. और मेरा ग्रेड का मार्क्स थोड़ा वीक है सर, तो वो ऐड नहीं करना है ना इसमें? That doesn't